हाय यारो, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये है क्वेश्चन पेपर 2025 का लिटरेचर एंड ह्यूमन राइट्स बीए प्रोग्राम इंग्लिश डीएससी सेमेस्टर 5 थर्ड ईयर। एंड क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थॉट क्राइम इन 1984 एंड विद अ चॉइस ऑप्शन। अगेन short note on resistance in 1984, then again short note Maycomb in To Kill a Mockingbird. Discuss Jim Crow laws in relation to Kill a Mockingbird. Okay. Discuss significance of the diary of Coelho in his story. Then write a short note on the narrators in Bay's short story ABC Antidote. क्वेश्चंस दिखे होंगे अच्छे से। एंड ये सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा है, बट इफ़ यू वांट मैं पढ़ाऊँ आई ट्राई माई बेस्ट। आगे देख लेते हैं इसी पेपर में क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। तो आगे क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं। एंड डिस्कस द dystopian world presented in Orwell's 1984. What are the human rights disregarded in this world? Comment on the significance of connection between surveillance and political freedom as suggested by phrase Big Brother is watching you in Orwell's 1984. Discuss Harper Lee's To Kill a Mockingbird as a Bildungsroman, okay, which uses the voice of the child narrator to critique the hypocrisy of adults. Discuss significance of ethicus words. They are certainly entitled to think that, and they are entitled to full respect for their opinions. But before I can live with other folks, I have got to live with myself. The one thing that does not abide by majority rule is a person's conscience. In Harper's Lee's novel. Discuss the experience of the narrator in Gordimer's story Amnesty. What aspects of human rights are brought out in the poems you have studied as part of this course? In your opinion, does literature have the capacity to raise awareness about human rights issues? Illustrate your answer with at least 2 texts included in this course. Well, we have to give example. Discuss the concept of empathy and its relationship with literature with special reference to at least 2 works you have studied in this course. यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होता है समाप्त। एंड ये गिर गया, वेट। हाँ, तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिए सारे क्वेश्चंस। एंड आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।